Hello and welcome all. Thank you for joining. Yeah, Tara, go ahead, please. Sorry to cut you in between. No, no. I'm so grateful for your presence. I'm so grateful for these beautiful gift calls that you make to all of us. And in whichever way I can contribute and all of us can, I'm sure we all feel the same for you. We all would like to contribute back to you. So, my just one basic thing that I would like to Thank share you. since you're starting this call here, that yes, it's nice to hide behind the camera. I don't think I'm looking as magnificent I normally look like. I'm sure we all afford to do study and everything. But I've bathed three Oh, dogs. thank you, Revati. Yeah. Thank you. I bathed three dogs. I'm still trying to clean myself up and Yeah. look all. I was like, मैं बाद में नहाती हूँ, बाद में I'll try to get pretty and everything. But let me get here. So, coming to that, once when you're on camera, and especially when you're on camera, when you want to receive, the multiplication of it gets even uh, magnificent. Yeah, like we do a class in person, or we repeat our textbook. Like every time, there's no comparison that when we go through our textbook or the information that we have, but when we are in present for a workshop or a class in person, it automatically expands everything. And especially if we are the ones who are talking about it and sharing it, totally, my personal point of view is that if we want to say something, it's, when we're not on the camera, we're hiding behind it. I'm not saying every time, like I hide behind the camera a lot because I do 10 things at the same time. At the same time, I don't want to miss even the energy of it. So sometimes, even if we can't be present, having the energy of it is magnificent. It's changing, but at the same time, if we can afford to show up, yes, there's more receiving. That's all I would like to say. And my bell rang, so I'm going to go off camera, do my things. Forgive me. Yeah. That's how the universe shows up, but I'm present and I'm receiving. I love you all. Thank you, Umesh, again. Thank you so much. And Thank thank you all for showing up. I'm right here. you. Yeah. Thank you. How are you, Deepti? And welcome, Sugandha and Asha. Thank you for joining. Thank you, Mish. I'm doing well, thank you. Yeah. Can't hear you, Umesh. Your audio has gone off. Audio is gone, no? Yeah, Just now. now? Yeah. Now better. Okay, thank you. Yeah. Yeah, I was asking Revati, she was sharing something, and then Revati, are you there? Yeah, I'm there. Tell me. Yeah, ma'am. Okay. Yeah, you were sharing something in between. Yeah, I said that I've been running. You I'm having fever were from last 2 days. 1 week and I'm on medication. That's why I was not coming on the camera. Hmm. So I said that relationships are very simple. Actually, the life is very simple. I don't know why people make it so complicated, And then they Yeah. said there is a relationship problem and then go into all kinds of consultations, counselings, Yes. this, that. I don't know why people have to makes things so complicated. For every problem, there's a solution, but people make solution a problem. Yeah. In the end. Yes. And then they say that, relationship problem. Hello. But everyone faces this relationship problem. There's a lot of misunderstanding. And there's a lot of intellectual incompatibility. Yeah. Yes. Maybe with the parent and the child, or with the spouses, so on and so forth. Or in the family itself, brothers, sisters. It Yes. can happen with anyone. With that, yes.
So I want to know what is the fundamental reason for this. Is it in our brains? You, and what if I ask you what is it for you? Then what is it actually? Means I didn't understand. No, as you're asking, I'm saying what is it for you? If I ask you what do you think it is for you? I think life is simple, life is straightforward. If you're honest, it's so simple to live, Hello, Raj. to lead. But if you're dishonest, then it becomes so complicated and you mess up everything. Okay. And what does messing up mean to you? Messing up, what I mean to say is, for every solution, there's a problem. Okay. They are making all yeah. solutions a problem. And what does problem means to you? Problem is, I'll tell you one incident like which happened recently. I told my husband that, don't go anywhere, don't travel, because he's not able to travel. Hello, And then Sonia. he travels and he Sonia. comes, and then he has a severe backache. He's having a severe backache that he's unable to sit or Okay. stand. So, it was as simple, he was very hale and healthy. But then suddenly it has happened because he traveled, could not take the stress of it. So as simple as it is, had he listened to me, it was just a week ago, he was very fine. And from yesterday is unwell. And so that's what I'm saying. Okay. And do you think he had traveled? He fallen sick because of he had traveled? Yes. Because he couldn't So take the he stress. didn't want to go, you mean to say, and he had gone? No, he wanted to go. For Then him, how do you say? For him, as you say, there is no point of judgment, point of view. Yeah. Okay. Yeah. He is like a child, like I want to go, that's it. Yeah. He So had what to go is for wrong in the it? Yeah. So That's what is what I'm wrong saying. in it? Now you If- see, Yeah. he's bedridden. Now he's bedridden. Yeah. So then what? If he hadn't gone, do you mean to say he hadn't bedridden? He couldn't have, he hadn't have been bedridden if he didn't go? Yeah. Yes. And what makes you think that? And how are you so sure about it? If he hadn't gone there, he couldn't have been on the bed. Again, I'm not asking from the wrongness. I'm asking what makes you think in that way. What I feel is, as we grow older, we have to take care of ourselves first, right? We have to keep. Okay. Only when we grow older, Yeah, we are all growing we have older. to take care. No, I'm asking. We have to take care. Start taking care only when we grow older. Yeah, more, because recovery takes a long time. Recovery takes a long time if something happens. And what does old mean to you? When do you think you are getting older? Since from 50 what plus. age? 50 plus. 50 plus means old to you. Okay. Of course, it's old. Okay. And what makes you think? When was the first time you thought, okay, being 50 plus means getting older? Because I could see my energy levels also getting less. So as you I grew realize older. after reaching 50, or you already have an awareness? After 50? I have seen, I am now 55. I've seen from 50 years, metabolic rate is less. Everything is getting lesser. Yeah. So we have to take care of each and everything. That's what I said. Yeah. Okay. So what I am asking you around ages. Even age is also a reflection, somewhere connected with relation.
matlab, due to age, you are trying, you thought कि your husband shouldn't have gone through because of Yeah, age. and Somewhere also he has age. a brain stroke. He has a brain stroke. Okay. And he's using a stick to walk. And he's 63 Okay. years old. He's 63 Yeah. years old. Mhm. Yeah. So all the more that he has to take care of himself, Oh. isn't it? Mhm. That's what is And bothering. isn't it joyful? Well, do you really think you have to bother, or you should be joyful? कि still he is moving on his own, and wherever he like to, he can go. That's what I want Are you him worried to. about yourself? कि if something happened as he is bedridden, so you have to take care of him, and it will be No, work no, for no. you. No, what I mean to say is, so far so So good. what makes you think कि he should have to take care, or Yeah, as we grow older? Because age is just a number. he just is For also. even for some people, 30 years is also old age. We had grown so much, and even for some people, 60, even 90 is also not being old. Hello, Jigna. Hello, Jatinda. So, what makes you think? What are you worried about age so much? And when was the first time you were worried about it? No, I'm not worried, but the only thing is, one needs to take care. But Having why? problems. That's what I am asking. कि why do you think कि someone should take care? And when they are doing or wanted, whatever they like to do, if they are doing that, that means they are not taking care of themselves. And finally, now he's bedridden, no? So what? What is wrong in being bedridden? Taking care. That's There's what I nobody. asked. Do you think, are you worried about you have to take care? Hello, No. Shalini. Hello, See, Shide. if I have to Thank take you care, for I'll take joining. Hello, care. There's no Mesh. Hello, excuse. everyone. Hello. Hello, yeah. Yeah. This is what- Yeah, of course, I need to take care. That's there. Okay. And why do you think you should have to take care? I need to take care. Why is it a necessity for you? Because he's If he's bedridden, your he husband. takes care of himself. Okay. So do you think it's wife's duty or responsibility to take care of Yes. husband? Yes. There's nobody else to take care. Okay. But if there is nobody else to take care, at that time, in that case, it's wife's responsibility, you meant to say. Okay. Yes, actually. Hi, good evening, Amish. Thank you so much. Good I'm evening. really grateful for you for conducting this call. Just asking you one question. I have a fantastic relationship with money. Just asking you how can I improve more relationship with money? Okay. Improve more means where do you think there's a conflict or resistance to it? If I ask you, what is the first thing that strikes your mind? When I'm asking about money, so Yeah. after some time it shows up, and I'm Okay. looking for there must be a instant result. Whenever I will ask any amount of money, it must Yeah. be present. Okay. So at the same moment, do you think at the moment I ask, it should be present in the same moment? Yes, It should yes, be yes. okay. Mhm. So do you really need that? Are you congruent to it? When you are asking, are you congruent enough to be the money to show up in that moment? Or somewhere you have a doubt that I can't get it in this moment, but I need it. Somewhere I have in mind it will create and definitely it will come, but it come after some time. Okay. So how do I
what to do to instant asking and instant receiving. So I mean, how can I improve more my receiving throughout the bank? Okay. And what makes you think it's getting delayed? Because it Is comes it after you- some time. It comes at a, After some time. it comes after some time. Uh, And is there anything stopping, or matlab, is it that something you have to wait for when money to that show I up, don't know what is your that. work is pending, being pending? Yes, yes. There's some work is pending, and I think some of the internal resistance or some of my internal point of view, which is responsible for delay. Okay. Yeah, that's why I was asking you what is it that is showing. And that I don't If I know. ask you, yeah, just asking you question, whether whatever shows up with that, it doesn't have to be relevant with your point of view. Just when I ask the question, whatever shows up wherever your first attention goes, just let me know that. Yeah. So just take a deep breath. And as you exhale, allow yourself to relax completely. And now, go to that moment where you think you have a resistance or money is being delayed. What is it? It might be the core of it. It might be the root cause. It might be the trigger point or the most significant moment that your mind requires your attention on to actualize the things in real time. So now, just let me know whatever the first thing that strikes your mind. First thing shows up in my mind. I had bought the reality of somebody else. Okay. Yeah. And when did you bought that? What made you buy that? Go to that moment. How old were you? What is happening? Where are you? Who are you with? Are you alone? Are you with someone? What's happening? Going on? Again, it doesn't have to be relevant. Whatever the first thought comes, wherever your attention goes first. How old are you? Whatever the number is. No, I mean, sorry, I'm not connecting. Okay. Fine. And normally, where do you think, well, at what age do you think you have bought that or listened to it? Someone else, as you said, I get you had bought someone else. It is somebody else. It is not mine. It is not mine reality. Okay. And where are you holding in your body? If I ask you, just scan your body from the tip of the toes to the top of the head and see where it is making it happen. In my head only. In my head. Oh, in your head. Okay. So On shift your specifically- focus to that. Yes. Specifically, temples area, you said? Yes. Same here. Yeah. Oh. So now shift your focus over there. Imagine taking out all the energy and keeping it in front of your eyes, giving it a shape, size, and color. What would it be? Or what color, what shape, which size you would like to give it to that all the energy, all the heaviness, whether it's pain, heaviness, resistance. What size, color, and shape will you give it? Violet color. Okay. Some kind of like shape is not clear. Okay. Only color is clear. Violet. Color is violet. And size is how much, how big or how small it is?
1-2 centimeter, not more than that. Okay. So now keep going closer to it. Go closer to it. Start moving closer to that violet color of 1 centimeter, an uneven shape. And as you are going closer to it, just be present with it. Any thoughts, emotions, feelings that are showing up, or any moments, whether it's image. How are you feeling? Are you comfortable going closer to it, working closer to it, or is there any or whatever shows up? Just once you reach to a point where it's not possible to move beyond that, just let Yes. it go. Yes. Reach there. How are you feeling at that point when you are completely at the point where it's not possible to move beyond that? Right now I'm not Are you, moving ahead, but okay, I'm comfortable. you are comfortable. Okay. And now step inside, step into that violet dot, that uneven shape of one. Step inside, go inside it, and observe everything inside it from all sides, all corners, and see what's happening. What's going on? Where is your attention going? How it feels when you are inside? And if I ask you, what is the first thing that comes to your mind? What are you worried about or stressed about? What is the first thing that comes to your mind? Thing is coming in my mind, how my future money will come. Okay. Okay. No, it was someone else. Oh. And what makes you worry about your future? Where do you doubt yourself? I don't know. How I will generate money in future, and Yeah. how I will survive in future. Yeah, that's what I was asking. Where do you doubt? What makes you doubt yourself? Where do you doubt yourself, or what makes you doubt yourself? No. In which area do you doubt yourself? That makes you worried about how you are going to make money in the future. Do you think you are not deserving too much in this moment, or you won't be able to generate? What makes you think? Can you get the energy of there is something, some doubt in your world or some fear? Whether it's your, and again it might be you have got it from someone else. But can you sense the fear, energy of fear or Yes, doubt of it? yes. I'm sensing the energy of fear and doubt. Yeah. Yeah. So just keep going deeper whenever if you're choosing for a call, it will be better, or else you can, whenever just sitting like that and keep going deeper into it. If what is it or what makes you feel doubtful about you? What are you fearful about when you ask this question and be present with it? Just notice wherever your attention go and whatever comes, whether you like to now or later. And we keep going deeper and deeper. And once you reach the core of it and see you will be able to see whether you still want to continue to be in fear or in doubt, or else you like to let it go. Because at some time, what I'm actually I'm not comfortable with this, and I'm asking this to go, let go right now. you are asking it, sorry. Yes, I'm asking. Okay. Yeah.
time, and even Al has a question. What does relationship mean to you? What do you love about relationship or stressed about relationship? Anyone? Any questions or any sharing? No, Mhm. no, nothing. Nothing. When was the first time you doubted yourself? When was I first time? When you doubted yourself that you are not good enough or potent enough to do that, this or that, and it's not possible for you to do, or it is going to be very tough. Actually, it's a process where we go take you much deeper. At this point of time in this intro call, I'm doing it a very short way and very working on a upper layer, but trying to go deeper, which sometimes you might go deeper and connect it like within a second, or sometimes it will take 30 to 40 minutes, 50 minutes too. Exactly. That's why I'm addressing also, but again at the same time addressing others. But And really feeling much lighter. thank you, thank you, Really, I'm grateful for you. Thank you so much. thank you. My pleasure. Thanks a lot. I hope this fear and doubt is, I mean, I'm able to let go right now. Yeah, then go ahead and do it. You doesn't have to be aware also. If you're able to let it go, then it's better. There's nothing like that. Okay. And if there is a resistance, you feel any resistance or to let it go completely, or still you feel heaviness, then we have to go dig deeper. Okay, what is it that we are holding it on? No, I am feeling Yeah. much better. I'm Much feeling better, much so better. it's absolutely fine. It might have already released. So many Wow. times it releases like that. Many times? Many times it releases just like that only. The moment we be present, it already released. It is already released. The moment, and sometimes where we had made it so solid or significant in the moment, then it sticks and we have to address that. Okay. Jignan, were you saying something Thank to you. us, or it? Actually, what happens, everything is just a reflection of even how we take relationships, whether with money, whether with body, whether with partner. It's everything is a learned response. How we took birth, and how we see in the family, how we see in the friends since we were growing up. Message already. So how in the family, whether they are stressed about anything and everything, we take into without being affected at that time. We just make it in a mind. Okay, this is how we have to live. This is how we have to react, whether we like it or not like it. Whether we resist or react. However, in what state we are emotionally, we take and make it a thing that this will be like this will be like this, and the situations might in the younger ages, at the time of it might be at studies, worrying about a study. We take study as a business, we take friends as a business, we take family as a business. Whatever they are saying, how we do it is a business or a relationship. We take everything. Just the energy changes, but emotional energy remains same. That just the situation changes with the age. It is getting interchanged with business, with relationship, with friends, with family, with wife instead. And whatever it is going through in the relationship, whether we try to control, whether we are being controlled, whether we have a fear or a resistance, whether even we don't get the partner, we are unable to have a child or anything. Everything is just a reflection of what is going on inside us. So once we address it, it is going to be very smooth, and it can be cured and shifted like anything within a moment. Once we address it, it will be completely shifted. Yes, yes. And
Revati, coming back to you again. Revati, are you there? Hello, Hello. Umesh, you didn't answer my question. Yeah, that's what I said. Yeah, coming, you to back. Hello, coming back to you again. Tell me. Hello, Yeah, I'm there. Geetu, how are you? Yeah, tell me. Yeah, tell me. I said, challenges Yeah, challenges are challenges. always there. Challenges are always there, Umesh, because the thing is, this is a very simple thing that one needs to Yeah, understand, yeah. isn't it? One is to, So one needs to understand that one is not okay, well and had a brain okay. stroke. Mhm. You can't take risk and keep traveling, okay? Okay, And yeah, then you can't take the stress of the travel. And finally, there okay. is nobody to take care also. Hmm? Yeah, If he falls sick, nobody is yeah, there to take care of him. So that is what yeah, I'm saying. He is like yeah, that, like you people talk, yeah, what is wrong, it's okay, you can. I mean, yeah, without thinking twice and with no yeah, judgment, no point of view, he just yeah. does work like that as it comes. When we say कि what is wrong in that, what is wrong for being you bad wife? We are saying that too. Why are you making that we are saying or taking a side only for him or only for the other person? Hello, Geetu. Two Geetu, do Geetu. Hello? Hello? Hello. हाँ, When I say, there's no, nothing where, wrong. if he's Nothing wrong, falling but ill then, and but see he's the point. getting bedridden, if But he's look at the being bedridden, consequences. so do you think you have to take the responsibility of him? Of course, Can I you have leave to. him? Why you Of have to? ये पर्दा कर दो लाइट डालें Why you have to? You don't want to be There's a bad nobody. wife? Yeah, because Umesh, there is nobody else. You don't want to be a bad wife or seen as kid. How the hell she is, like she can't take care of her husband. You don't want to listen that. no, nothing like that. Then are you taking care of him from the love? It's a responsibility. Okay. When, malab, if it's a responsibility, do you think it's a necessity? Or you Yeah, are making it a necessity? it is a necessity. A person How? can't get up from the bed now. Yeah, but how is it a necessity for you? Okay, you have to take care. That's what I'm asking. Then who else will take care? That is his problem. If you don't care for him, I'm asking, are you taking care? Thank Are you. you doing it from love? Thank you. Yeah. Okay, no, I don't take care. Then I'll no harm. take this. Do you have a bag जिसमें डाल देंगे? क्योंकि मैं लेके जाऊंगी उसमें डाल. तू म्यूट कर रहा हूँ जब अनम्यूट कर लेना बात. हाँ Umesh. यार tell. Okay, I don't take care. Then who else will take care? That is his problem. Why are you making it your problem? If he doesn't listen to you and you don't want to take care of him, it's absolutely fine. Is it? Yeah. A person, if he doesn't eat food, it's okay. Yeah, it's absolutely fine. Either he will get up, either he can order something. He can hire a person to take care of himself. If you are there, he doesn't feel a need. Yeah. Can I add to this Yeah, with yeah, your sure. permission? I just heard one thing that someone is saying that someone is not eating. I just heard this conversation. I would just say one thing. Can we stop mothering the other person? Can we just let that person be? हमको हर एक का माँ बाप बनने का जरूरत नहीं है. We all are adults. We all are grown ups. Even our 10-year child is a grown up. हम कहते हैं कि खा ले, but the child can eat. Similarly, any age person, no matter how much we love that, we don't have to mother that person anymore.
प्यार है, so relationships की बात हो रही है, relationship रहने दो ना, don't impose yourself on anyone. That is all that I can say. Let's stop imposing ourselves on the people that we love or we are married to. Let them just be. The way Umesh and Aradhana and Deepthi always say, like a lot of people that I know from Access say, कि जियो और जीने दो, right? Let them live. Let Relationship them का live. मतलब ये नहीं है कि वो हमारी bonded labor है या हम उनकी bonded labor है, right? और वो बनाएंगे तो लेबर हम Thank ही you, होने Umesh. वाले Thank you. हैं. I hope it My makes pleasure. sense, and I am not hurting anyone's sense. feeling here, but Yeah. I Makes thought sense, I'll at put least. it across. Right? Yeah, Thank you. Thank you so much. Thank you. Yeah. And just as Kitu said, कि if we are going to be try to control them, we are the only person who are going to be controlled. मतलब we are only going to be the labor when we try to tell them कि how to do it or not. And as you were saying, कि I told him not to go, he went it and he got a, मतलब he got so sick, got such a back pain and he is bedridden. So you are making yourself right too with that. Okay, see, I told you, you don't have to go. And I was aware that I have to suffer to take care of you, but you don't have to take care of you. To take care of him, I mean. Are you getting my point, Revati? Revati, are you there? Yeah, I'm listening, Okay. but I'm not convinced. Yeah, I'm not convinced. you are not convinced. So, do you love? Would you like to acknowledge that you love taking care of him? And it's not wrong. We are not saying that you don't have to take care of him. If you like to take care of him, it's absolutely fine. But you are मतलब telling or saying, thinking that it's a necessity for you. Necessity for him. Necessity for him means that He's you should unable take. to get up. He's unable to get up. He's unable to move. He's Yeah. unable to turn. A Yes. person like that, do you think he can go prepare some food and eat? No. He can order. He can. Even you can order for him on behalf of him. You can hire a person, or he can hire a person for him to take care of him. Where you are you thinking if it's no one, if there is no one, then you have to take care of him. You can't leave him in that way. That is completely different thing. It's not a necessity. You can't leave him out of love the way you have defined whether. And again, if you are getting irritated, you can always say no, and you can hire a person. Ask him ki what would he like to, how would he like to live, or how he would like to come out from this situation. Because I am not going to take care of you. If you like to, and if you think it's a necessity, it's not a necessity. If he recovers in a week, it might be when you don't take care of him, it might require him 30 days instead of a week, or he might get up within a 2 day, within 1 day, or within 2 hours, 2 days, whatever, whenever he wants to get up. And even if you like to take care and go ahead taking care of it, if you are doing it from fun or to maintain or see yourself as a good wife, good partner, good friend, or a good human being, even that is just because of you, that you don't want to feel bad about yourself, you are doing it from that way. It's not a necessity. And you love taking care of him, again, that is also not a wrong thing. But when you're saying I am suffering because of him, that is what I am saying, you are giving up your power to him. Now are you getting my point? And what would you like to do? Would you like to continue taking care of him, or would you like to say I don't take care of you from now, or what? I am not saying it's a wrong thing. You shouldn't
you should not take care. If you are getting irritated and you are saying it's a toxin for me, in that case you can say no, because it's going to be seen, you are going to be seen bad, even bad friend or bad human being also, not with, we don't have to go till wife to, if the person with whoever you are staying it, and if you are the only person to take care, if you don't take care, then you are going to be a bad person, judged as a bad person. Even if nobody other tells you, it's wrong for you. Okay, how can you sit yourself? Then it's for you only, if you are taking care of it. It's not about him. How is it you or कैसे हो? Yeah, आप कोई muted or mute? अच्छा, on call you are saying? नहीं, तो muted. Am I audible now? Yeah, audible. Earlier it was How am I? so Thanks for thought asking. I am doing fantastic, and I hope I look fantastic. And yeah, so busy at work and busy changing my life and not changing. I'm just a growth catalyst, so I'm busy doing that. wow. I just trigger the change for other people and then they choose. So Revati, I would just add one thing here with Umesh's permission. एक perspective आ रहा है, may I? That अगर कोई dependent भी है, अगर कोई physically challenged भी है, what choices, I'm getting this question, so I'm saying it might work, it just popped up. What choices can you make or can I make to ensure that you are not entangled, the way you feel you are? This is the question. I would just make it short. What choices can I make, or what energy space consciousness can I be in to not be tied up with the person that I am taking care of? Because I chose to take care of that person. So what different can I be and do to make myself at ease? सबसे पहले बोलते हैं ना, एक वो saying है, you cannot pour from an empty cup. So let's have our cup full. Let's be well fed and energetic to take care of the person. What if it's just a choice, to take care of that patient? I had a patient, bang, Diwali was on the head. I'll just share my own experience. I had a patient who was almost on deathbed. Just 2 days before Diwali, 7 दिन तक हॉस्पिटल में थी मैं उस पेशेंट के साथ, और मैंने सब मैनेज भी किया और उस पेशेंट को ठीक करके घर भी लेके आई. बट यहाँ पे ये है, either that patient chose me or I chose that I will take care of that patient and I will not sleep. Yet I would come home and do all Diwali work. But that was my choice. It wasn't a necessity. Yeah. In a way. And if you like to take, और मैंने thank you. And last thing, हाँ, मैंने सोचा हाय मेरी ड्यूटी है, हाय घर में इतने मेहमान आएंगे दिवाली में, और गुजराती का नया साल भी होता है दिवाली के अंदर नेक्स्ट डे, और आई एम मैरिड टू अ गुज्जू, आई एम अ पंजाबन मैरिड टू अ गुज्जू, तो आई हैड टू डू एवरीथिंग. तो एक दिन तो मुझे भी स्ट्रेस आया, आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, मैं लिटरली रो पड़ी, आई बर्स्टेड आउट ऑफ टीयर्स ऑन अ कॉल विद माय वन ऑफ माय फैमिली मेंबर्स कि यार देयर इज सो मच ऑन द प्लेट. एंड देन द मोमेंट आई लेट इट आउट, देन आई वाज लाइक व्हाट एम आई चूजिंग, व्हाट एम आई अट्रैक्टिंग? क्या मैं और काम अट्रैक्ट करूं या मैं ईज अट्रैक्ट करूं? You would not believe, the moment I started choosing and attracting ease, everything was so easy peasy. भगवान ने क्या किया, दिवाली के अगले दिन नया साल ही नहीं था, एक दिन बाद था इस बार क्योंकि कुछ अमावस्या थी या कुछ तो था, तो मेरे कहा भगवान जी थैंक यू, मैं बच गई एक दिन के लिए. फिर मैंने उसके अगले दिन सब किया, साड़ी वाड़ी पहनी, तैयार हुई, पेशेंट को घर ले आई. एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, दैट पेशेंट वाज माय हस्बैंड, रादर इज माय हस्बैंड, जिसको डॉक्टर्स ने डेड डिक्लेयर कर दिया था.
कि ये नहीं बचेगा, Okay. और मैंने लड़ा था that इसको कुछ नहीं होगा. So my husband also Wow. chose to live, and I brought him home, and today we are. So see, I'm a Suhagan, and everything is good. Yeah. Wow. Thank you for adding to my Definitely. chapar. Thank you. I hope it Thank contributes to you, thank someone you, here. thank you. Yeah, yeah. Totally did, my love. Totally did. And please tell me you ran exit stage left for him as well. I read it in my mind because he hates access consciousness. But you did, right? You did. You Yes. did. I Thank did. you. Thank you for reviving his cells and yours at the same time. What a blessing. What a truly blessing. And please recognize what a magnificent creator you are, that not only, you created him back in your own space, but you changed him New Year only. मतलब हद हो गई बहना. नहीं मतलब वो मैंने नहीं सबका किया, वो तो timeline पहले change से ही कर दिया था. आपने. नहीं आपने क्योंकि सबका सब अपने timeline change वर्ल्ड कर में तो दिया. आपने ही किया. हमारे वर्ल्ड में भी कर दिया, हम मान रहे हैं ना. आपने हाँ. हमारे वर्ल्ड में भी एक दिन बाद कर दिया. और क्या चाहिए? कौन सी वैलिडेशन चाहिए आपको? बोल क्या रहे कोई हो? भी नहीं. और लेकिन सोचो ना, जिन लोग को अगले दिन मनाना था ना, वो 10-12 गेस्ट उस दिन भी आए. But Umesh would know, it's a fury of guests. Like you would get 25 to 30 guests in a day with their paltan. So that day I was blessed to just have 9 or 10 of them. और फिर परसों तो नेक्स्ट डे तो आए ही थे जितने आने थे. किया आपने सब Yeah. किया. प्लीज आई गेस Okay, इट्स I done. acknowledge Tara. I acknowledge. More power to you, girl. More power to you. More power. Thanks Thank for you. acknowledging. Oh, there's another Gitu here. Hi, Yeah, Gitu. that's what I said in the moment she joined कि आज दो Gitu हैं. abundance हो रही है हमारी जिंदगी में. हम तो Abundance. एक्नॉलेज ही नहीं करना चाहते. मतलब हद हो गई हाँ. यार. हो गई यार. Yeah. और मैं Thank you ना for अभी acknowledging. ऑफिस से निकल के तुम लोग से बात कर, like I'll speak to all of you, and after 10 minutes I have to go. I'm in a mall, and अच्छा. अभी पिज्जा का फ्लेवर आया किसी को या नहीं? मैंने अभी पिज्जा भी खाया. मुझे आया टोटली आया बहना. सुपर आया. ठीक है. So what did I miss on the call, guys? कोई मुझे बताओ. I joined at 5:30. So what did I miss? Can You someone missed summarize? खाली रात में मनी क्रिएट की, इजी कर लिया मनी को, वो मिस किया, बाकी कुछ ज्यादा मिस नहीं किया. तो अब मैं म्यूट होती हूँ. Let's others speak. Deepti, I want to hear you, darling, and I'm so happy to see हाँ you. देवी. Thanks for saying that, Geetu. Thanks for your love. I just saw Umesh's ad on Instagram talking about relationships. Are you sad, disappointed? Does love mean this or love mean that to you? Yeah. So all those words were right there, alive in my world. Relationship, love, sad, disappointment. So I thought, let me jump into Umesh's call and see what I get from here. So that's how I'm here. Oh, great. Thank you. So tell, what is it for you? Umesh, can What you I facilitate me on one thing? Rather, most of us here. You Yeah. guys say in Access relationship is creationship. So मैं थोड़ी देर वीडियो बंद कर रही हूँ, and I want to listen to you with closed eyes that why relationship is a creationship and why should we live like that. Thank you. I want to ask you, what does relationship means to you? Instead of thinking relationship is मतलब creation. तू जाने नहीं देगा, मुझे बुलवाएगा. ठीक है नहीं, भाई. हाँ. Relationship. Hello, Imla. What did you say? What is What relationship? does relationship means to you? Yeah, what is relationship to you? For me, उसका जो हिंदी वर्ड है रिश्ता या रिश्ते, and in English relationship for me is when you relate to someone and that someone is you and others. That is what relationship is to me. It's a bond. It's a bond. In one word, I can say relationship to me is a bond. Okay. Yeah. And that bond. Okay. And how do you feel in relationship? Abhi, you're meeting the new version of Gitu. So for me,
I like relationships to a certain extent, but for me, all my relationships are a creation. तो अच्छा आंसर तो मैंने ही दे दिया यार. Okay, it's all creationship for me now. Oh, Yes. yeah. Earlier I used to feel And when bonded. Now I yeah. don't feel bonded. Now I don't feel bonded. Oh, Because now I ensure देख तारा हंस रही है. ऐसे Because हाँ now I don't control anyone and no one can control me now. No one can control me now. एंड तो लेकिन आप मुझे आपका पर्सपेक्टिव सुनना है हाँ क्रिएशनशिप वही का. पूछ रहा हूँ मैं कि जो बोल रहा हूँ कि टू दैट एक्सटेंट भाई कुछ तो फिर भी बाकी रखा है कि उतना वो नहीं है. यार तो वो क्योंकि हम क्या है इंडियंस हैं और क्या रोक के ये रखा वाले है. रिश्तों में है ना, ये सब में तो कहीं ना कहीं आप स्ट्रिंग्स अटैच हैं. हाँ कहाँ पे बट है क्या क्या है family 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 tree, like the way the tree and the branches are. और वो तो सपोर्ट है ना, वो तो सब the अरे वो way the branches. सपोर्ट के लिए रखा है ना. नहीं मैंने होने का सबको नहीं डर रखा, है. कईयों ने मुझे भी रखा है, कईयों ने मुझे भी रखा हाँ है. तो आपने भी उनको रखने दिया है ना. हाँ और वो सपोर्ट की वजह से चाहे आप उनको दे रहे हो सुपीरियर फील कर रहे हो या उनसे ले रहे हो उनको सुपीरियर बना रहे हो. नहीं यार, नॉट अ सेल्फलेस लव रॉन्गनेस. वाली हो गई हूँ मैं. हाँ तो फिर बांध के कैसे रखेंगे अगर सेल्फलेस लव है. जब खोने का डर नहीं है तो फिर बांध के क्यों रखोगे. या कोई कौन कैसे बांध के रखेगा अगर खोने का. अब जैसे शादी है, अगर रिलेशनशिप मैरिज है, तो मैरिज में तो इंडियन पीनल सिस्टम या इंडियन मैरिज सिस्टम के हिसाब से तो आप शादी मेंटेन करते हो ना. तो आप भी मेंटेन कर रहे हो. चला नो, मतलब आई एम नॉट खुशी से नहीं मेंटेनिंग, है आई जो एम नॉट है वही मेंटेनिंग द बोलो. कोई मैरिज. वर्ड से अच्छे से प्रेजेंट करने की जरूरत नहीं है. जो नेचुरल फ्लो में आ रहा है वही बोलो. यहाँ पे वही कोई बोल रहा हूँ आपको मैं, वो खराब याद नहीं करो. सोचने वाला है कि कैसी वाइफ अरे बाबा मैं वो नहीं कह रही, है. आई एम सेइंग इट्स अ प्लांट दैट आई अच्छे एम से नर्चरिंग एवरी डे. ये बोल रही हूँ. आई वाज आर यू ट्राइंग टू पुट डूइंग इट इट फॉर अक्रॉस. फ्रॉम जॉय और आर यू ट्राइंग टू चेंज हिम. मिक्स्ड. रेवती वाली बात आ गई यहाँ पे भी. वो थोड़ा सा कंट्रोल मिक्स्ड. कम है पर हाँ. और मेरा भी तो लालच है. आई लाइक बीइंग मैरिड, हाँ आई एंजॉय इट, आई एंजॉय द हाँ बेनिफिट्स. इट्स नॉट रॉन्ग आई एम सेइंग. जब जो भी पूछ रहा हूँ वो कहीं रॉन्गनेस के हिसाब से नहीं करना चाहिए तो नहीं पूछ रहा हूँ. तो कहाँ पे ऐसे आई लगता हेयर है यू. कि उनको चेंज होना चाहिए तभी अच्छा होगा या मेरे लिए बर्डन है या ये नहीं हुआ तो फिर तो चलेगा नहीं. नहीं अभी तो वो वाली स्टेज आ गई है 2023 के कॉम्प्रोमाइज खत्म होते करते हैं. होते, कि जो जैसा है वो सही है. लाइक यू आर राइट is, and I acknowledge that the other हाँ, person is also right. हाँ. पर फिर भी अगर चेंज होगा तो ऐसे तो आखिर तो इंडियन मैरिज है तो कॉम्प्रोमाइज तो करना पड़ेगा. Not at तो all. नहीं तो क्या मुझे है. लगता है तो मैं नहीं तो क्या. कॉम्प्रोमाइज करूंगी. तो आप बोल तो रहे हो दिखा किस तो रहे हो कि मैं अच्छी हूँ. मैं कॉम्प्रोमाइज कर रही हूँ. इंडियन वुमेन को कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता है मैरिज में. That किसको was the old दिखाने के लिए version of कर रहे me. हो. हाँ. बस So कर would you उमेश like to मेरे को. मैंने पते मत खोल क्रिएशन सबके पूछा आगे. था. जब रिलेशनशिप की डेफिनेशन छोड़ दोगे तो सब कुछ क्रिएशनशिप ही है. तो डेफिनेशंस में लेकिन जहाँ इसका पे पता है, बंध जाते हैं हम वहां पे दूसरे को भी बांधने की कोशिश करते हैं खुद भी बंधे हुए रहते मेरे को एक चीज अभी भी क्लियर नहीं हुई, जो आप हैं. एनीवन कैन टेक दिस, एम आई ऑडिबल? या कि मेरे को कई बार ये इंटरप्रिटेशन आता है जब मैं डिवोर्सलेस रिलेशनशिप पढ़ती हूँ, या अभी हम जब रिलेशनशिप की बात कर रहे हैं, मुझे ये इंटरप्रिटेशन आता है कई बार कि व्हाई व्हाई शुड वी इवन हैव अ रिलेशनशिप. मतलब मुझे ये क्वेश्चन आता है. सो डोंट किल मी गाइस व्हेन आई आस्क दिस, दैट यू रिलेट टू समवन, दैट इज हाउ यू आर. या तो तुम बाय ब्लड रिलेटेड हो या बाय बर्थ रिलेटेड हो, बट हम तो जिंदगी में कितने रिश्ते बनाते हैं ना, हाँ और हम उनको चेरिश उसको भी सीख. करते हैं और कईयों को हेट भी करते हैं. हाँ, लेकिन लेकिन कहीं ना कहीं वो जो शून्य है, लाइक वी ऑल वांट टू बी इन दैट स्पेस ऑफ पीस एंड कामनेस. तो फिर कई बार लगता है दैट ये सब क्यों, ये बंधन क्यों. दैट इज व्हाट मे तो बी इट बंधन गॉट ओवर. किसने बोला. हाँ, किसने बोला है कि रिलेशनशिप बंधन.
किसने बोला है कि रिलेशनशिप में हो तो बंधे हुए हो या बंधे के रहना पड़ेगा? आप कहाँ पे बांधना चाहते हो रिलेशनशिप में, जो लगता है कि मुझे भी बंधे रहना पड़ेगा, नहीं तो वो भी नहीं रहेगा बन के, या एटलीस्ट इतना तो बेसिक है। That's why you are facilitating the session. Umesh is pure magic, and I would like to thank vouch for you. that. So Yes. much और तारा, amazing. आप पता नहीं मेरे पहले कॉल्स में थे या नहीं, मतलब मेरी बोलती बंद कराने वाले ना अभी ये 2 ही लोग हैं एक्सेस वाले, तो बहुत हो गए, बट जिनको मैं जानती हूँ, एक आराधना तिवारी और एक ये उमेश, ये लोग हमेशा मुझे चुप करा देते हैं। गैंग सेम ही है बाय द वे। क्या कह रहे हो? के बच्चे हम या स्टूडेंट है, बच्चे रेप्लिकेशन है, जो भी बोलना है बोल दो। और इसको बड़ा मजा और आता है जब मैं उमेश बोलती को हूँ ना अपनी लाइफ में चूज भी तो अपन ही लोगों ने किया है। It is our choice. Yeah. तारा, where do With you what? stay if I may ask? I stay everywhere, my love. Right now No, but in which Jaipur. अभी कौन से प्रदेश में कहर ढा रहे हो? हाँ, अभी फिलहाल तो मैं जयपुर में घर में बैठी हुई हूँ। पिछले 4 महीने से निकलने की कोशिश कर रही हूँ पहाड़ों में जाने की। But I live in Dharamkot, Himachal. That's where I live. That's where my work is. But Wow. but thank you so much. Thank you. I guess that's 𝗵𝗐 now because I don't think. Yes. So I've thank you written for. GMR, my initials. Yeah. Okay. So that stands for 𝗵𝗐 मक्कड़ MRD. राठौड़। मक्कड़ अरे राठौड़। बसा भाई ना जयपुर में, मतलब खमागणी। मेरा पति एज वी स्पीक, मेरा पति जयपुर में ही है और वो कल रायपुर की फ्लाइट लेके रायपुर आ रहा है। एंड आई एम अ दिल्ली गर्ल एंड आई स्टे इन रायपुर। Awesome. How does it get better than that? So much abundance in our world. I'm so excited for this new call, which this beautiful, magnificent man that creates in all our worlds. He's so adorable. He's so kind. He's so expansive. I haven't, like, my whole gratitude, मतलब मैं ऐसा नहीं है मैं लेती, I am present on all of his classes. Besides the classes also, I go behind and like, सुन भाई ऐसा करना, मेरे private class भी ले ले, मेरा session ले ले तू, और घंटों घंटों तक ले ले. But I'm so grateful for his presence and for this beautiful call that he's created again. So thank you. थैंक यू And उमेश। Aradhana, नाउ आई एम और आप सबको भी थैंक यू। आई नो आई हैव दिस हैबिट ऑफ ब्लास्टिंग बट लव यू ऑल एंड थैंक यू सो मच। आई विल बी ऑन द कॉल बट अब मैं वीडियो बंद करूँ क्योंकि मुझे यहाँ से जाना है। हाँ ठीक है। उमेश थैंक यू। और देख तुझे फिर आज मेरी तरफ से चॉकलेट, क्योंकि तूने आज फिर मेरी बोलती बंद कराई। अच्छा मेरी चॉकलेट कहाँ गई यार? ये कोई बात है? मतलब एनर्जेटिक चॉकलेट तो मुझे भी मिलेगी गीतू, ये क्या डार्क बात है? चॉकलेट चाहिए या फ्रूटेड नट चाहिए, कौन सी चाहिए? सरप्राइजिंगली जो चॉकलेट नहीं होती वाइट मुझे वो अच्छी लगती है, बट आई लाइक 99% cacao also. So a box full of you coming right away. Yummy. Yummy. So Love see, you all. exactly. Yeah. Love you all so much. And exactly this is what I meant when we get present, like, with our faces and there, and especially we are allowing the facilitator to facilitate the thing, it really makes such a big difference. So please, whoever wants, whenever whatever, I'm nobody to say anything, but I'm just sharing my personal experience. Being on camera while being facilitated contributes not only to you, but it contributes to all of us. So I think I'm being selfish. Yes. Yes. So just before me signing off, who's next? Come in, please. I love you too, Sandeep, please, thank you. Me too. And keep in touch, guys. And उमेश, मैं ना मिस कर देती हूँ. I'm sorry आपके. अब मैंने I will be on your calls consciously. I'll choose to be on the calls. Yes. Okay. All right. Yeah, Thank you. Yes. मुझे म्यूट कर दो, वीडियो में ऑफ करूँ, पता नहीं मैं म्यूट क्यों अच्छा कर रही हूँ. हाँ कर दिया। दीप्ति आप
मैं बस म्यूट करके बैठ गया, कुछ बातें आप इतना मस्त बोल मैं रहे आज हो, सुनने वर्ड आई सुन हूँ, मैं के सुनने आई आई हूँ। हूँ। उमेश कितना ब्लश कर रहा है, देखो कितना ब्लश कर रहा है, कितनी क्या कॉम्प्लीमेंट मिल क्या रहा है। पूछ रहे हो आप उमेश? क्या पूछ रहे हो? क्यों गीत पूछ रहा हूँ कि हाँ, क्या क्या वर्ड में जो बोल रहे हो तो फील कर रही हूँ सुन के, तो देखूं सब मेरे अंदर भी चल रहा है, क्या चल रहा है आपके लिए So रिलेशनशिप का? relationship, yes, past couple of months relationship was a big time. वैसे भी आई थिंक Okay. बचपन से रिलेशनशिप मेरे काफी, कभी स्ट्रगल करती हूँ, कभी फ्लो करती हूँ, कभी सीख कर रही होती हूँ, कभी कंफ्यूज होती हूँ. सो ऑल दैट इज ऑलवेज हैपनिंग. Disappointment was a word that came up. Sadness is something that I uh, constantly keep in touch with. Okay. And disappointment is something that I acknowledged this morning. I think that maybe it's coming up in a bigger way. It had showed up earlier, but अब दोबारा से शायद मैं disappointment के touch में हूँ. Relationships में, family, Relationships में, parents, siblings, everybody, spouse, only touch wood with children. Abhi, अच्छा. I can flow my love to them easily. Okay. And that's still, and because I give enough space to my children, I'm not a very, so I feel I'm not a very hovering mother. And space is something which I love in relationships. Okay. And yet I don't want to feel spaced out. Yet I don't want to be alone, you know, space. Yeah. So these are my words. Umesh, can you please facilitate me to know What are whatever I you? say? Yes, yes, sure. Thank you for allowing. And what does disappointment means to you, or what makes you feel disappointed? क्या क्या है? Disappointment comes with a Yeah, certain किन बात? expectations I hold in certain how I would like a relationship to be, wherein I can flow more easily, wherein I have to act less and be more. But where I'm acting more and being less, then that creates disappointment in me. Wherein I have to be very cautious, where I have to be very, very cautious of what I'm saying, how I'm being, or embarrassed, yeah, right word, embarrassed about something. So what is it that you don't want to lose, or what have you lost? I've lost is making you interest in my blood relationships, if I dare say that. And that's my truth at the moment. I have lost interest in something which is handed down to me as a must. You have to maintain relationships with your parents. You have to do this, wala. And who says that? हाँ, वो कौन बोलता है कि ये करना पड़ेगा पेरेंट्स? मैं ही बोल रही होंगी, आई एम श्योर, अपने अंदर से. क्योंकि मैंने कितनी एज के बन रहे हो जब ये बोल रहे हो? कितनी एज के बन रहे हो? पहली चीज 9 is coming up for me. 9. Go to that moment. 9 साल की एज में से अगर चाहिए तो आके बात करो, खुली रखो, मेरे लिए इक्वल है, आपको जैसे कंफर्टेबल हो. 9 साल की एज में जाओ, देखो वहाँ क्या हो रहा है. Are you alone, or अकेले हो, कहाँ पे हो, अंदर हो, क्या टाइम, जो भी जहाँ पे भी पहले अटेंशन, तो क्या हो रहा है, क्या कर. Don't know. How are you feeling at that point of time when you are nice? Again, it doesn't have to be relevant. तो वो मत सोचना कि इसके relevance में ही कुछ आना चाहिए. जहाँ पे भी energy में भी totally joyful हो, यहाँ पे आप stress वाली situation ढूंढ रहे हो और वहाँ पे कुछ joy की खेल रहे हो, मस्ती कर रहे हो, वो energy आ रही हो. या 10 जो आ साल रहा की है या वो 12 साल बताओ, की आ रही हो, जो आ रहा है वो बताना है. हाँ. Yeah, it's a dark place. Okay. And I'm feeling alone. Okay. You are feeling alone means you are alone, or there are people but you are feeling alone.
Both might be, but just what is it? I think I'm alone. Okay. Fine. And how are you feeling when you're alone in the dark? What is going on? It's claustrophobic. It's like walls. Wall fan. Okay. Yeah, too close. Walls are too close. Too close. Okay. What makes you be there? वहां पे कैसे गए? या क्या हुआ जो वहां पे आए? इसको क्लोज में रखा हुआ है. How did you came there or reach there? Or what were you doing there? I'm looking for something. Okay. What is it? Light. I'm not editing, so whatever is coming up. Yeah, it's absolutely fine. I need that on. You don't have to edit. You are looking for light. Okay. So just observe, explore it, where it is, where you have to move, what you have to do. You don't have to be worried about it. You don't have to be fearful. Is it my heart? And with your heart. Okay. Yeah. Go to that point. मतलब in your heart. Shift your focus so that. Say that again. Shift your focus. Take your focus to your heart area. That you are feeling like 𝗪𝗪𝗪 and so close. What is going on? What are you holding on to or hiding that you don't want to see, or it's what had happened? What triggered you or felt you? And what you felt so bad about him? The first thing that comes to your mind is check. Just go deeper with every breath you take. Clown. Okay. Allah, clown. What Clown. did you say? Clown, you are. Okay. Just a word that's come. Yeah. Better. Fine. What does clown represent? What does clown mean to you? Funny in a scary way. Okay. In a scary way, what are you fearful about a clown? Wow, उसकी वजह से कहीं क्या हुआ था? What had happened that clown makes you scary? Makes you feel scary? You don't know the intentions of the clown. Okay. अच्छा. And why do you want to know their intention? Because all painted, no? Yeah. So do you think they can harm you? They can surprise me, they can shock me, they come with a premise of fun, being funny. Okay. But they're not normal, no? They're not comfortable. Okay. But can they harm you unless you don't give them power? It's a scene from Harry Potter.
Okay, yeah, I was about to ask that only. Okay, well, Yeah, I just connected. I just yeah, realized. right. Great. Mhm. And I've really watched Harry Potter very. I mean, I have a tendency of watching things so closely that they. Closely, okay. Yeah, okay. So would you like just go to that moment and tell that younger Dipti And with this tell what? awareness? What would you like to tell that little Dipti, younger Dipti, when she is so fearful and thinking about that, connecting it from movie Harry Potter, the clowns can harm you. In that moment, the teacher was telling that when the fear comes, then you think of your happiest memory, and I can't find my. Yeah, pretty fine. I can't find my happy memory. Okay. Mhm. Absolutely fine. Don't worry. So I'm stuck here. Okay. So do you think you hadn't been happy in any moment till now? Is it so? Since I you were mean, born, it's you not hadn't like been it's like it's that. very Till that moment. Yeah. It's very. either it's very imposed, I feel, or it's very. It's not inside out. It's outside in. Okay. I want it to be inside out. Mm-hmm. You feel inside out. And what does happiness means to you at that point of time when teacher asked you? And you weren't able to And the find any answer. judgments right now. I'm also judging myself in this moment Oh. of being a drama queen. And what were you getting from by doing that drama? I don't know. Okay. Sympathy, is it? Yeah. Okay. So would you like to hug that little Deepti? Tell her it's absolutely fine. I totally get you that you wanted sympathy. She might. Is she feeling alone, or she wasn't getting much attention? The way she liked it, or she Yeah, was she seeing was that feeling unsafe and left out. unsafe and left out. Okay. So ask her, look into her eyes, and ask her what makes her feel unsafe and left out. Unsafe to be accepted the way she is. Okay. And what makes him feel that? Probably she thinks she's different. Okay. Is it fine to be different, or is it wrong for her to be different? Yeah, it's fine to be different. So what is it that she is not in 11th or what makes her feel separated? Thing? What do I do now?
Is she really okay being different, or she wants to be like everyone else to get the compliments or to be acknowledged by everyone? Does She she wants really to like to be mingle. like? Yeah, she wants to be. Can she mingle with that difference? Because she wanted to be like them and then mingle. She wants to be herself and then mingle. Yeah. Can she do that? Tell her it's absolutely fine. You don't have to be like anyone else. You can be you. You can be the difference, and still you can mingle. Does she feel that they won't accept her or include her with the difference she is? Is there any doubt to her? There's some freedom I feel in my heart. Okay. Some freedom you feel in heart. That's what you said, right? Mhm. So is she fine the way she is, and is she able to mingle? Well, willing to mingle the way she is? Till now, she was sitting huddled in a corner. So Okay. now I feel the energy has expanded Yeah. inside me Okay. to grow up and be me. Okay. That's what I'm feeling. Getting. Yeah. Awesome. Shall I open my eyes? Yeah, sure. And still have some shame. Yeah. Thank you. Shifted with you. My pleasure. We'll connect with you again separately also. Oh, yeah, sure. Thank you everyone and sorry for Why sorry? वो last class में भी था. Why sorry? अरे वो सही. Sorry for being myself, no? I'm sorry for Yes, being myself. I think that's myself, what. yeah. Because you are different, you think you are different. I don't know why I think so. We're all different. Yes, We're all unique you, and yet not. yeah. Thank you. Pleasure. I hope I don't hide again. Yes. Repti, how are you now? Alhamdulillah, how are you? Yeah. Shalini, when will it start? It will start. Well, I am planning to do it from on Monday and Friday, twice a week. For 1 month, it will be 8 calls of group sessions. In a way, matlab, in a similar way, we are doing it. Yeah. And thank you for asking. You just asking how, when it will be, when it will start. And it will be a 1 month call, ongoing call, 8 calls, twice. It will be twice a week. And energy exchange will be 8,000 for 8 calls. Just a token amount.
कहाँ गया कितनी देर का पोस्ट? वही आपको उमेश मुझे सोचा कुछ था बोला? करके मैं वो वाली गीतू से पूछ रहा। हाँ उमेश क्या बोल रहा है? अब बोल, मैं वॉशरूम में थी, बोल। अच्छा हाँ, नहीं वो दूसरी गीतू को बोला था। ठीक है, so I'm still on the call and guys, bye bye, अब फाइनली अब मैं जा रही हूँ और उमेश जल्दी मिलते हैं। बाय हाँ बाय। बिल्कुल, थैंक यू, बाय बाय। क्या बोल रहे हो? पल्लवी, क्या बोल रहे हो? हाँ वो पूछ रहा है उधर, कमेंट मैसेज में ही लिख रहे थे ना, देख रहा था आपके ऑनलाइन थे, फिर बंद कैमरा। मैं बाहर हूँ ना, इसलिए मैंने ऑफ करा। अच्छा बाहर हो, ओके ओके। इसलिए मैंने बंद नहीं करा हुआ है। अच्छा हाँ, हम्म। और कुछ क्वेश्चन था, और कोई किसी चीज पे बात करता है? तो व्हाट इज रिलेशनशिप फॉर यू में, चलो आप बताओ। मेरे लिए रिलेशनशिप की कोई डेफिनेशन नहीं है। मेरे हर किसी के साथ, हर चीज के साथ, हर पर्सन के साथ रिलेशनशिप। रिलेशनशिप आपके हिसाब से इस वर्ड का क्या है? इस वर्ड का क्या है? इस वर्ड की मतलब हाउ डू यू डिफाइन? आई डोंट डिफाइन। मैं लोगों की डेफिनेशन छुड़ाता हूँ, फिर मैं डिफाइन करके क्या है। लोगों की ना, मैं सबकी मैं डेफिनेशन तो करना क्यों है, जब जो अच्छा ना, जिस मोमेंट में जो अच्छा लग रहा है वो रिलेशनशिप को लेकर। तो आपने अपनी भी तो कभी छोड़ी होगी ना, आपने भी तो कभी होगा ऐसे। हाँ छोड़ी होगी, मतलब हाँ वैसे इतना ना। छोड़ी मतलब डेफिनेशन छोड़ी होगी। क्या क्या छोड़ी होगी? डेफिनेशन छोड़ी होगी जब अच्छा कभी। हाँ, वे थी पहले से ही कम, पर हाँ उसको डेफिनेशन बना के, मतलब मैं उस रॉन्गनेस में होता था कि ये होनी चाहिए, क्यों नहीं है, मतलब जैसे बोलते थे यार, बोला ना कि केयर नहीं है या किसी की वैल्यू नहीं है, उस रॉन्गनेस में होता था पहले। चाहे किसी ने बात नहीं किया, छोड़ दिया, तो फर्क नहीं पड़ता है मेरे को, तो मतलब मेरे को केयर नहीं है, इसके लिए भाई मैं वापस नहीं पूछता हूँ, या उन्होंने वैसे किया, या मैं किसी को अगर बार बार नहीं पूछ रहा हूँ तो मेरे को केयर नहीं है, या मैं अपने लिए चूज कर रहा हूँ भाई काइंड ऑफ जो मेरे को करना है, पर घर वालों को नहीं पसंद आ रहा है, चाहे सिस्टर हो, चाहे वाइफ हो, चाहे फ्रेंड हो, भाई नहीं पसंद आ रहा है, फिर भी मैं तो कर ही रहा हूँ उनको जैसा भी लगे, तो मेरे को उनकी वैल्यू नहीं है, मैं उस रॉन्गनेस में जाता था पहले। तो मतलब अभी ऐसे करते हो कि मतलब मैं बात कर रहा हूँ बिकॉज यू लव टू टॉक। ये तुम्हारा हाँ पॉइंट ऑफ व्यू यही रहता है कि वो बात कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, बिकॉज यू लव टू टॉक, यू हाँ थिंक, हाँ बिकॉज यू आर नेचुरल लाइक दिस। या तुम देख लिया 5-5 6-6 घंटे के सेशन दे देते हो, तो फिर नेचुरली ऐसे। हाँ। और एक्चुअली अगर देखें तो मोस्टली सभी वैसे ही होते हैं, पर बहुत जने जल्दी वो फिल्टर फिट इन होने के लिए कर लेते हैं कि काइंड ऑफ। मतलब ये ना, हाँ रिलेशनशिप तो बचपन से बॉन्डिंग बॉन्डिंग वर्ड बहुत आता है ना, हाँ बॉन्डिंग बॉन्डिंग। ये चीजें हाँ बचपन से ही आपके अंदर हो जाती है, बॉन्डिंग हाँ होनी चाहिए, कंपैटिबिलिटी होनी चाहिए, ये चीजें बहुत आ जाती है। हाँ, अपने ज्यादा डिटेल अच्छा बनना करेंगे। है, ये करेंगे तो पेरेंट्स अच्छा बोलेंगे, तो उसे ये चीज मिलेगी, ये मिलेगी। हम्म, जाने का मन नहीं कर रहा कि तू बैठ जा आगे अच्छे बनोगे तो बड़ी मतलब अच्छे, मतलब अच्छे से काफी डेफिनेशन होती है। हाँ। This too is a relationship that I choose. Yeah, thank you. तो गीतू बोल रही है कि मुझे कॉल से जाने का मन नहीं हो रहा है, ये भी रिलेशनशिप ही है कि तुमको छोड़ के नहीं जाना चाहती हूँ, एंड आई चूज। थैंक यू, भी पता नहीं आपको कब, नहीं जाने देना चाहते हैं पता नहीं कब क्या लड्डू मिल रहा है, अच्छे अच्छे बन के। अच्छे वाले। हाँ हाँ मेरे को स्कूल में जैसे अच्छे बनने की है, बचपन से ही जो आता था एग्जाम में, मतलब 4th 5th से ही ऐसे
छोड़ दिया था। मेरे को जो काम का लगता था वही पढ़ना है आता था। फिर भी अगर फ्रेंड्स बाहर खेलने चले गए, मेरे को खेलना है तो पेपर दे के चला जाऊंगा कि चलो बाहर भागो खेलने के लिए। और अरे फैमिली में वैसे मैं सबसे छोटा हूँ, 6 भाई बहन है, सबसे छोटा मैं हूँ। जो भी करता था हर चीज में कंपैरिजन होती थी कि सब कुछ ऐसे हैं, सब हमारे घर में टॉप आते हैं, फर्स्ट ही आते हैं, ये वो, तू पता नहीं क्या ही करेगा, ये करेगा। मैं सोचता था इनको बुरा लगता है, मैं करूं क्या उनको, तो या तो फिर छुपा के करता करता तो फिर भी वही था, कभी रोका नहीं था खुद को नहीं करने से। छुपा के कर लेता था सब, क्या ठीक है कि उनको नहीं देखो तुम्हें you कमरा were कमरा always भी हाँ छुपा हुआ म्यूटेड कमरा हो, मिला मैं हुआ भी है। वैसे। हाँ मैं भी घर पे छोटी हूँ, सो आई हैव दिस सेम फीलिंग कि या तो ऐसा क्या करूँ जो सब एक्सेप्ट कर ले, या मैं छुप के करूँ। अच्छा सब एक्सेप्ट करे, हाँ या तो छुप के करूँ वही। चेतना वो अभी लिख रही है मैंने। और रिलेशनशिप में भी हर किसी का पूरा सबके फैमिली के अगेंस्ट ही होता था। अगेंस्ट ही मतलब उनको लगता था अगेंस्ट, जबकि मैं तो जो करना चाहता था वही करता था, फिर अपने उसमें बैठ के डाउट करता था। सब जने बोल रहे हैं तो मैं ही पागल हूँ या वैसे अलग की जगह, तभी ऐसे लगता था कि ठीक है वी आर डू ऑड वन आउट हूँ, पर ठीक है कि मेरे को तो वो करना ही है। तो फिर तुमने क्या किया जब तुम्हें लगा कि चुपके करना है फिर सॉरी then क्या जब तुमने जैसे कहना कि मैं चुपके करता था, मैं करता था वही, देन व्हाट डिड यू चूज, उसके बाद कैसे किया फिर? एक मिनट, एक बार वापस से पूछता हूँ, वो गीतू का सुन लूं कि कुछ बोला। हाँ गीतू बोलो बोलो, वो बाहर से कल आई है। जैसे ये वो सही है कि मैं सिर्फ चुपके करता होता जब मुझे करना होता था, हाँ ठीक है, तो अब इसके लिए देन हाउ डिड यू स्टार्ट शोइंग अप देन? स्टार्ट शोइंग, हाँ वैसे इतने टाइम तक वो फिर छुपा हुआ ही रहता था कि जो भी करता था जो अच्छा लगता था वो भी छुप के ही करना पड़ता था कि पता नहीं क्या कब बुरा लगेगा, या फिर इसके लिए मेरे को मना कर दे तो फिर फैमिली की जगह हर किसी के साथ वैसे ही करता था कि जो करना है चुप करके कर लो, किसी को बताने की या वो करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि पागल समझे, बुद्धू समझे, डम समझे, जो भी जिसको समझना है, मेरे को जो करना था वो तो करना होता ही था मेरे को। तो फिर कैसे व्हाट डिड यू चूज देन व्हेन यू स्टार्टेड शोइंग अप? व्हेन यू स्टार्टेड शोइंग अप, जब वो सोचना छोड़ दिया कि अच्छा भले लोग समझे, पहले होता था वो भले सोचे या जो भी हूं, पर दिखना नहीं चाहता था वैसा कि खराब हो या डम हो या ऐसे कैसे कि सब जने इतने स्ट्रेस में बैठे और उसको खेलना है या खाना है या ये करना है। कोई भी जैसे घर में किसी की डेथ हो गई तो भी, या कुछ भी हुआ, मतलब कोई भी सीरियस टॉपिक पे बैठ के बस कर रहे हैं, डिस्कशन चल रहा है, कोई कितना भी स्ट्रेस में है, अगर मेरे को उठ के खाना है, कभी मूवी देखनी है, मतलब करना है भाई फिक्स है, मेरे को ये तो करना ही करना है भाई, मूवी देखनी है, इस टाइम पे इधर घूमने जाना है, तो कुछ भी हो जाए तो बिना सोचे चला जाता था, पर सिर्फ बता के नहीं। या खाना भी है तो उधर घर की जगह बाहर निकल के कुछ भी खा के आ जाऊंगा फटाफट। तो बताना कैसे शुरू किया फिर? तो उस टाइम अच्छा बनना होता भाई, मतलब लोग वो नहीं सोचे कि ये कैसा है, जो रेवती को बोल रहा था ना कि भाई अच्छा नहीं बनना चाहते हैं लोग क्या बोलेंगे, खुद को लिए मेरे को वो नहीं था कि वैसे। यू वर ऑलवेज बिंदास यार। अब मैं बोलूं कुछ? हाँ हाँ बोलो बोलो, मैं पहले भी पूछ मेरे रहा को था एक कैसे। गाना याद आ रहा है, फिर मैं जा रही हूँ ट्रांसपोर्ट में, मैं आई वाज सेइंग वो गाना याद आ रहा है, आज जाने की जिद ना करो। करो गला खराब है, नहीं तो हाँ। गा देती मैं। म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, म्यूट हो गए, गीतू म्यूट हो गए, अनम्यूट करो गाना। सॉरी, मुझे कोई कॉल आ गया था। आई वाज सेइंग अच्छा फाइनली कॉल आई आ वुड गया था जस्ट, मुझे।
हाँ, मैं म्यूट हो गई थी। मैं कह रही हूँ, मैं लास्टली एक चीज बोल के आज के लिए जाना चाहूंगी दोबारा जल्दी मिलने के लिए आप सबसे, कि हाँ, मैंने अपने लिए ये लाइन लिखी थी और उस दिन अपने पति को सुनाई थी, और यार तुम लोग को एक लाइन पका नहीं रही हूँ, बट बहुत अच्छी लाइन लिखी प्लीज। मैंने, हाँ, कि पहल करो खुद से प्यार करने की, पहल करो सेल्फ लव की, है ना। वो हाँ, इंस्टाग्राम से जो इश्क करते हो, ए जालिम जरा खुद से भी कर लो वो इश्क। Awesome, और एक लास्ट awesome. चीज, या लास्ट लाइन, सो देयर इज दिस भजन, या भजन नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, सूफी लाइन है जो मैं बचपन से सुनी, और मैं आज ये हर उस इंसान को बोलती हूँ जो बोलता है कि यार मेरा पति या मेरी बहन या मेरे पापा मुझसे कम प्यार करते हैं, तो मैंने उसको बोला कि बोलो कि तुम्हें खुद से प्यार है। और क्या लाइन है वो, एकदम अच्छा भजन है, तुम आप में से किसी ने सुना भी होगा, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे रास आ गया है तेरे दर पे सर झुकाना, मुझे मिल गई है मंजिल, मुझे मिल गया है ठिकाना। तो मैंने उसमें क्या ऐड किया है कि वो मंजिल भी क्या मैं बात. हूँ और वो ठिकाना भी मैं ही हूँ, क्योंकि ये पूरा ब्रह्मांड मेरे बाहर भी है और मेरे अंदर भी है। कृष्ण ने यही तो दिखाया था ना, ऐसे करके हाँ, आ करके कृष्ण ने यही दिखाया था, हाँ, बिल्कुल राइट। बिल्कुल। राइट, तो ये That's रिलेशनशिप में सारे मेरे wonderful. अंदर भी हैं और मेरे बाहर और भी बाहर हैं। भी है। हाँ, तो I would don't want to cry, but when I said this to Rajat, I said it, मुझ में तू है तुझ में मैं हूँ, मुझ में तू है मुझ में मैं हूँ, न जाने क्यों ये दरारें भी आ जाती हैं, न जाने क्यों। वाह। Wonderful. ना बट जाने ना जाने पे तो कैसे आ जाते हैं बहना, मुझे इतना ही पता है। सब तो जानते हैं, हम बस, सब जानते हैं। तो जो इससे पहले वाला था ना, लेकिन वो बहुत जरूरी है कि जिसको हम बाहर ढूंढते हैं, जिसकी तलाश हम बाहर करते हैं, क्यों कर रहे हैं ना, हाँ, वो सब हमारे अंदर है। हाँ, Last thing, we want someone to kiss us, someone to take care of us, someone to give that pat on the back. Don't expect ना, खुद को pat on the back दे लो ना यार, नहीं देगा Beautifully कोई। said, वो beautifully कैसे या said, आई वुड so जस्ट, beautifully said, दीदी। हाँ, क्योंकि आपकी उम्मीद है, आपने साड़ी पहनी है तो पति कॉम्प्लीमेंट देगा तो ही मैं अच्छी लग रही हूँ, खुद को कॉम्प्लीमेंट दे लो यार। और खुद को दोगे ना, दुनिया बैठी है कॉम्प्लीमेंट देने, कितनी हॉट लग देने रही के हो लिए। तू, कितनी हॉट यस, लग रही हाँ, है। यस, प्लीज नेक्स्ट टाइम साड़ी पहनो ना, प्लीज यस। श्योर। द यू मोमेंट यू ऑल स्टार्ट, देयर। the moment yeah. you increase your self-worth, that freaking boyfriend, that freaking husband, girlfriend, with all the people you expect from, वो खुद से देखना आपको, मेरे को एक याद रखोगे आप, कि तूने बोला था जो नहीं कर रहा वो ये करना, तुमको ऑटोमेटिकली वो लोग वैल्यू करने लगेंगे जिस दिन तुम अपनी सेल्फ वर्थ बढ़ा लोगे। तो उमेश knows the 3-4 years back fragile version of me. I'm being so, मुझे कोई शर्म नहीं आ रही है बताने में, I was a very emotional and a fragile person earlier for some period of my Yes. life. बट आज मैं इतनी स्ट्रांग हूँ कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं बोलना चाहिए, मुझे फर्क पड़ता है, बट अब मुझे वो हैंडल करना आ गया हाँ, कि वो बोल रहा है तो भी अच्छा लगता है, नहीं बोल रहा है तो भी अच्छा लगता तो है। भी अच्छा लगा। लव यू ऑल फॉर फाइनली, बाय बाय, Love मेरा गाड़ी you वाला आ गया, वो too. गाड़ी Bye दे रहा है, bye. बाय बाय Bye बाय। bye. Love you too. Thank you for your contribution, my love. व्हाट्सएप में शेयर कर देना. Yeah, दीप्ति, बाय बाय। क्या क्या? अच्छा, हाँ। व्हाट्सएप में शेयर कर. बहुत बढ़िया उमेश, बहुत एक्सीलेंट कॉल, मजा आ गया है बस. Thank you, husband. Yeah, hi, Cheta. Hi, missed it. We made it at least at the end. Thank you. Thank you. अभी मुझे पता नहीं क्या क्या बातें, इंटरेस्टिंग क्या क्या बातें हुई तारा। बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें हुई हैं। आपको
कोई वीडियो पे आओ तो बात करेंगे हम, और वरना विदाउट वीडियो बात नहीं होगी। हाँ, ख्याल नहीं भी आके फिर वीडियो बंद कर दिया, बस लग रही थी बीच में बस बात ये कोई बात नहीं होती उमेश, मतलब बिना वीडियो तो फैसिलिटेट ही नहीं करोगे आप, ये मेरी डिमांड है, मेरी डिमांड है। मैं जब भी आती हूँ कुछ खाती हूँ, उस वक्त इसमें खा रही हूँ। हाँ तो हमें हाँ अच्छा तो लगता क्या है हो गया, खाते खाते हुए खाते देख के, करो ना, उसमें क्या है। आज हमें रेस बहुत लंच अच्छा लगता है हुआ आपको खा के देखते हुए। आओ दिखाओ हमें क्या खा रहे हो आप। आहा, ये हुई ना बात। लौकी की सब्जी, दूधी की सब्जी और चपाती। आई लव दैट, अरे, आई लव लौकी, वेरी सिंपल एंड वेरी नाइस। बस आई लव इट, आई लव दैट टू गीतू, थैंक यू, एंड राजू थैंक यू, थैंक राजू थैंक यू। यू, सच्ची बात। मैं ऑफ कैमरा जाती हूँ राज बिकॉज अगर आई हैव ड्राइव कर लॉट रहे ऑफ हो तो फिर बंद इमोशंस। कर दो, बोला क्या लॉट्स ऑफ। I'm you know ना, like उमेश यू नो ना कितनी नॉइज, कितना ड्रामा हो रहा है। मैं मेरे अच्छा घर पे नहीं हूँ, जब हाँ, मेरी मम्मी के घर पे हो तो बहुत कुछ हो रहा होता है, that's why I go off camera. But my favorite thing that I can totally vouch for is that when I'm present on the camera I receive more. It's as simply as put. If I want to receive more, I be present on camera and it doesn't matter मेरा hot seat है किसी और का hot seat होता है, तो हम आउट ऑफ रिस्पेक्ट ऑफ कैमरा जा सकते हैं, बट और कुछ नहीं है। whenever we are on camera we totally receive more, totally totally yes, totally totally. yeah, thank you. Yes, चेतना जी। हाँ नहीं बताओ जी। हाँ चेतना जी, now I put my glasses, now I can read some names. bring it on, bring it on, anybody? रिलेशनशिप खुद से होना चाहिए ना हर चीज के लिए। खुद से क्या होना चाहिए, फिर से रिपीट करेंगे आप? रिलेशनशिप का तो मतलब कनेक्ट जो हम बाहर से एक्सपेक्ट करते हैं वही है ना। बाहर से एक्सपेक्ट करते हैं, क्या क्या एक्सपेक्ट करते हो बाहर मतलब आई एम जस्ट आस्किंग कि आप लोग ने क्या से? डिस्कशन किया, क्या क्या डिस्कशन किया, बहुत सारी आपके हिसाब से बात। रिलेशनशिप कैसे होना चाहिए औरों से, क्योंकि हर एक बंदे से रिलेशनशिप बहुत अलग है। अलग होता है, हाँ तो फिर कैसे डिफाइन करोगे आपकी कैसे होना सिमिलैरिटी तो नहीं चाहिए। होती किसी से भी। नहीं, किसी से भी, और होने की जरूरत भी नहीं है, बस वही बात की है। ओके हाँ कि बट हर कहीं मोमेंट में सेम पर्सन के साथ भी सिचुएशन डिफरेंट होती अलग है, तो होता वो है। भी फिर भी Yes. अलग हो जाता है। तो डिफाइन करने हम्म की कहाँ जरूरत है, या एक्सपेक्टेशंस आ रही है जो भी, तो वो कहाँ से आ वो रही है, क्या क्या। एक्सपेक्टेशन से वही हमें मारता है, वो और जो वो एक्सपेक्टेशन एक्सपेक्टेशंस आ कहाँ से रही है ना, उसके हमारे डेप्थ में, और वो जैसे क्लियर करते जाए, ये तो हाँ हमसे ही हमारे, आ रहे हैं, एक्सपेक्टेशंस तो हाँ हमसे ही हम ही आ रही करते है, हैं। हाँ वो वही जो स्टार्टिंग में डिस्कस कर रहे थे, मतलब शेयर किया जो, तो वो वही कि हर चीज हम सीखते हैं, जो भी हम आते हैं बॉर्न होते हैं तो ब्लैंक स्लेट होती है, क्लीन स्लेट होती है, और हर चीज हम सीखते हैं। खुश होना, दुखी होना, पेन क्या है, हाँ प्लेजर क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, रिलेशनशिप क्या है, हाँ किससे कैसे बात करनी हाँ चाहिए, किससे क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, अगेन वो भी पर्सन टू पर्सन वेरी करता है, और हम किस तरह से उन चीजों को, इमोशनल अपब्रिंगिंग हमारी कैसे हुई है, हम किस तरह से हाँ उन चीजों को हाँ लेते हैं वो, और वो अभी भी और काफी सारी चीजें ऐसे कि अवेयरनेस के साथ अभी हम ऑलरेडी चाहते कुछ और है करना, या पता है कि इन चीजों से इफेक्ट नहीं होना चाहिए, पर फिर भी रिएक्शन वहीं से आ रहा होता है, ऑटो रिस्पॉन्स नहीं, चला जाता है। तो जब ये डीप डाइव करते हैं और जहाँ पे जो जो चीजें शो अप होती है उनको क्लियर करते हैं, तो वो अभी भी वही ऑपरेट करने का, वैसे ही ऑपरेट करने का जरूरत है, या अब उसको छोड़ के आगे बढ़ना चाहते हैं। तो जब आगे उस बढ़ो पॉइंट तक पहुंचते हैं जहाँ से वो पॉइंट ऑफ रिएक्शन आ रहा हाँ है और उसको रिलीज करते हैं, तो वो चेंज हो जाता है। लाइक क्योंकि होता है क्या है पहले जब, और अभी में जब मिशी मैं पहले जब थी बहुत इमोशनल थी, फिर धीरे धीरे जो चेंजेस अपने आप में लाई हूँ और हाँ एक्सेस में आके तो प्रॉपर अवेयर। हाँ हाँ बिल्कुल।
मैं तो बहुत इमोशनल थी, हर चीज छोटी छोटी चीज में रोती थी। आई टू क्राई अ हाँ, लॉट। अब और रोना इमोशनल है, वो रोना, इमोशनल है रोना। हाँ, आई लिंक इट और रोते एज थे तो इमोशन। बोल नहीं पाते थे, या रोने के बाद बोल नहीं खत्म हो पाती जाती थी। थी वो हाँ, चीज? मैं बोल नहीं पाती थी। ओके। और रोने के बाद खत्म हो जाता था, या अंदर रखते थे फिर भी लगता था कि मैं अंदर रोई रखती हूँ? थी मैं, अंदर रखती थी। हाँ, और वो कहाँ से सीखा? आई थिंक या आई लर्न बोलोगे? फ्रॉम मम्मी, आई लर्न फ्रॉम मम्मा। हाँ, हाँ। डैडी भी इमोशनल हैं, पर वो बताते नहीं, दिखाते नहीं, वो बहुत नहीं कर, इमोशनल है। हाँ। So it is coming from parents what और I have got. या उस एंड हिसाब से विद जब दिस मैं शादी अवेयरनेस करके की, आई तो यहाँ पे तो बिल्कुल भी इमोशनल नहीं थे, बिल्कुल मतलब डेयर डेविल, बिल्कुल मेरे लिए अलग एटमॉस्फेयर था जब मैं शादी करके अच्छा, आई थी। हाँ। मैं दैट आई लर्न कि इमोशनल किस चीज का, यू नो, लाइक हाँ, मीन और सेंसिटिव थी मैं, बहुत सेंसिटिव थी। हाँ, और रो के भी अगर जो बोल रहे हो कि इमोशन अंदर ही रख रहे हैं, तो फिर रोने का क्या फायदा, या नहीं बोलने का क्या? रोने के बाद भी छोड़ तो नहीं रहे हो। यस, पकड़ तो के रखा हुआ है। हाँ, और बोल के भी अगर अंदर ही रख रहे हो, जैसे आपकी भाई समझो कि अगर वो बोल रहे हैं, आउटस्पोकन है, फिर भी अंदर ही रख रहे हैं, तो इमोशनल, इमोशनल तो वो भी हुए ही। हाँ, अगर बोल के नेक्स्ट मोमेंट में फर्क नहीं पड़ रहा है कि ठीक है, जो बोल दिया बोलना था बोल दिया, उसके बाद तो वो कोई ग्रजेस नहीं है, कोई हेट्रेड नहीं है, कोई गिल्ट नहीं है, या कोई प्यार एक्स्ट्रा वो नहीं है कि ये मेरे लिए किया भाई, ठीक है, किया किया, वो नॉर्मल बात नहीं सबको। और हमेशा मुझे एक चीज बात बताई कि बीइंग ब्लंट, हाउ फार इट्स गुड, मतलब किसी को हर्ट ना हो, बीइंग ब्लंट। अब बीइंग ब्लंट मतलब किसके लिए होना है? आपको दिखाना है कि मैं ब्लंट हूँ, या अपने लिए ब्लंट होना है कि जो आपको करना है वो कर रहे हो, कोई मना करे या नहीं करे? मतलब कोई कर कह रहा है या मना कर रहा है, और उससे फाइट करने की कितनी जरूरत है? कि तू गलत है, जब फाइट करने जाओगे या ब्लंट सामने वाले को दिखाने के लिए ब्लंट होना है, तो कहीं ना कहीं हम उनको रॉन्ग ही प्रूव कर रहे हैं। नहीं, दिखाने के लिए नहीं, कभी कभी ऐसे पॉइंट ऑफ व्यूज आते हैं तो कभी कभी मैं ब्लंट बोल देती हूँ, तो मुझे फिर मैं सोचती हूँ कि अगले को हर्ट तो नहीं हुआ। क्यों होगा हर्ट? मतलब आपकी वजह से उसको हर्ट हो सकता है, या उसको खुद की एक्सपेक्टेशन से लेकिन हर्ट मैंने होगा, उसे तो बोल होगा भी दिया, तो। बिना सोचे बोल दिया ऐसे। हाँ, तो वो आपको उस पॉइंट तक लेके क्यों गए, हम्म। जब आपको बिना सोचे बोल दिया? जब आप रिएक्शन तो आ ही सकता है कहीं भी कहीं पे भी। अगेन वो आपके लिए क्या लगता है, आपका कुछ काम उसमें बिगड़ रहा है, इज डिस्टर्ब हो रही है, वो चीजें, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो वो प्रेजेंट रहना रिएक्शन करने की जगह। भाई ब्लंट हाँ, होना भी अपने साथ, अगर ब्लंट होगे तो जहाँ पे चिल्लाने की जरूरत होगी चिल्लाओगे, नहीं चिल्लाने की जरूरत होगी नहीं चिल्लाओगे, और वो अंदर नहीं रखोगे। इफेक्ट नहीं होगा कि मैं नहीं बोल पाई, वीकनेस नहीं होगी, वो स्ट्रेंथ ही होगी आपकी। हम्म, पर रिलेशनशिप में जब, जहाँ पे हम मोस्टली चीजें करते हैं वो वीकनेस से करते हैं, नहीं खोने की वजह से या इमेज मेंटेन करने की वजह से, तो हम्म, वो एक डिफरेंस हो जाता है। हाँ, हम्म, हम्म, सही कह रहे तो बोल दिया आपने, सिर्फ उसको बुरा नहीं लगे इसके लिए आपको बुरा लग रहा है, या हो। लग रहा है कि क्यों बोल दिया है क्या, तो वो खुद को ही वीक कर रहे हैं, खुद को सप्रेस करते मैं जाओगे, नेक्स्ट टाइम से खुद ही बोल। मैं वो सोचती हाँ, रहूंगी, फिर अपनी कहानी बनाती रहूंगी। हाँ, खुद को अच्छा दिखाने वो के लिए चीज करना होता है, देखो मैं कितनी अच्छी हूँ, गुस्से में बोल तो हाँ, दिया, पर मैं हाँ, ऐसी वैसे इतनी खराब नहीं हूँ। नहीं हो। क्योंकि कहीं ना कहीं खुद को वो बनाया हुआ है कि अगर कोई हमारे साथ ऐसे करे बिना सोचे बोल दे, तो वो गलत है या खराब है। अगर वो डिफाइन किया हुआ है, मतलब वैसे गलत है, तो वो खुद को अच्छा बनाने के लिए डीप डाउन इतनी सी बात ही होती है, पर वो जब इमोशन हाँ, वहां से वो क्लियर हो जाता है, तो सारी चीजें सॉर्ट आउट अपने आप सब सॉर्ट आउट होना शुरू। हर चीज प्रूव करने के लिए कि हाँ मैंने ऐसे बोला। रीजनिंग हाँ, रीजनिंग। रीजनिंग, हाँ।
relationship is a huge topic. हाँ. And we teach people how to treat us. हम हर किसी को सिखाते हैं हमको कैसे ट्रीट करो. हाँ हाँ, हम ही सबको सिखाते हैं हमको ट्रीट कैसे हम ही करो. सबको सिखाते हैं. जैसे जी, हम खुद को ट्रीट करते हैं वैसे ही सब हमको ट्रीट करते हैं. सही. बिल्कुल. चलो. Thank you so much. Thank you. Thank you all. I mean, Dr. Pallavi, Urmila, Shalini, Raj, Geetu, Tara, चेतना और बाकी सब जिन्होंने help किया. Thank you. हम कल मिल रहे हैं ना? हाँ कल. ठीक. और ये सीरीज आप थे जब बताए. जी, क्या? बस ये रिलेशनशिप का अभी सीरीज का कॉल वो कर आप रहा हूँ. मंडे रिकॉर्डिंग से स्टार्ट है. मंडे या तो मैं फ्राइडे. देख हाँ लूंगी. जी ठीक है. जी. हाँ थैंक यू. चलो. थैंक यू. बाय बाय. Thank you. Bye bye. बाय बाय.